क्या मैच था! ओ माय गॉड, फैंटास्टिक! वर्ल्ड सेमीफाइनलिस्ट बोलते यार, मैं तो क्या मैच था। द बेस्ट मैच आई थिंक वी सीन सो फॉर। यस, श्रीलंका इंडिया भी अच्छा मैच था। इंडिया पाकिस्तान खैर नो कंपटीशन उधर, तो इंडिया क्लीन स्वीप कर दिए थे। लेकिन आज का जो मैच था, आई थिंक वी कांट गो बैक टू बेड। आई नो इट्स 140 हो रहा है इधर, but I am still reliving the moments of the last Pakistan Sri Lanka encounter, जो last over specifically जिस तरीके से शाहीन दादा, जिस तरीके से पाकिस्तान कम बैक करी, फिर श्रीलंका नर्व्स पकड़ा, बाउंड्री मारा शाहीन को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, शादाब खान के दो एक्स्ट्रा रन्स which changed the context of the game at the end of the day. I mean, a fantastic match. शुरुआत से देखो आप, पाकिस्तान did struggle. फखर जमान has been a very big problem for Pakistan. थोड़ा बहुत slight in swing हुआ and फखर जमान, फिर I think फखर जमान को call out करना पड़ेगा because he has been a weak link in the top order for Pakistan. Pakistan should start considering to probably play फखर जमान down the order and probably promote maybe मोहम्मद हारिस और बाबर आजम himself in the top order, because फखर जमान को नए बॉल खेलना बहुत मुश्किल दिख रहा है। अब्दुल्ला शफीक जबरदस्त डेब्यू पे 50 मारा, डेब्यू तो नहीं, लाइक अच्छे फोर्थ ओडीआई पे 50 मारा। बाबर वाज लुकिंग गुड, बट फिर वेलेल आ गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, केएल राहुल, एंड नाउ बाबर आजम, ऑल द बिग फिशेस। दिस किड इज गोइंग टू गो प्लेसेस। जबरदस्त बॉलर है, बनते जा रहा है। बाबर आजम अगेन डिड नॉट रीच द लाइन, केम आउट टू अटैक, गॉट स्टम्प। उसके बाद फिर इफ्तिखार अहमद एंड रिजवान की जो पार्टनरशिप थी यार, फैंटास्टिक पार्टनरशिप, स्मैशिंग इट। अगेन ग्राउंड स्टाफ को क्विक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना है। जितना बोले भाई, वो कवर्स का वेट, वो कवर्स को पुल करना, वो कवर्स को कॉन्स्टेंटली पुल करके वापस लाना, फिर आज तो बारिश दो बार बैक टू बैक हुई। उसके बाद ग्राउंड्समैन लाए, फिर कवर बिछाए, फिर हटाए, फिर बिछाए। आई थिंक फैंटास्टिक जॉब फ्रॉम द ग्राउंड्समैन। वाकई में बहुत मुश्किल काम है। एंड जिस तरीके से सिंक्रोनाइज तरीके में, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर, दे नो एग्जैक्टली कि क्या टाइमिंग पे कैसी चीज करना है। लेकिन बारिश लगा के बारिश स्पॉइल कर देंगी होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान। बट मैच हुआ, और क्या मैच हुआ बॉस! लाइक आई थिंक ये मैच अच्छा हुआ कि ये मैच हुआ एंड बारिश से खराब नहीं हुआ, बिकॉज़ वी वुड हैव मिस्ड अ स्पेक्टेकल। क्रेडिट टू श्रीलंका द वे दे हेल्ड देयर नर्व्स। आई मीन, बीच में ओवर्स में श्रीलंका ऐसा लगे कि भाई बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कर दे रही है, बट देन श्रीलंका खुद स्टार्टेड गिविंग अवे द मैच। जहां पे आपका ये समा विक्रमा चले गया था आपका। उसके बाद कुशाल मेंडिस आउट हो गया था अनफॉर्चुनेटली। ब्रिलियंट कैच बाय मोहम्मद हारिस, क्या जबरदस्त कैच पकड़ी। फिर आया चरित्र श्रीलंका, और जो वो चिपका भाई, उसके सामने गया, दर्शन शनाका निकल गया, धनंजय द सिल्वा चले गया, दिमुत वेलालागे चले गया, लेकिन बंदा खड़ा रहा, बंदा डटे रहा। I think it was a fantastic chase by Sri Lanka. The way he held his nerves, yaro, too much, yaro. Ibrahim, the Pakistan problem has squad problems when they get close to the world. Not exactly, and that's the reason that Haris is not playing. Haris की oblique में injury है, which is why he was rested. Naseem Alish right shoulder injury, which is why he was rested. So I think that was one of the reasons. But आप उनकी depth में देखो, एक जमान खान बेचारा, he bowled a fantastic last over. But that last ball that he bowled, बाबर वही देख के परेशान हो गया भाई, पूरी मैंने फील्डिंग ऑफ साइड पे सेट करी हुई थी, आपने लेग साइड पे डाल दिया। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली प्लेस वेयर आई वुड से जमान। एंड देन अगेन एज हो के अनफॉर्चुनेट चलेगा, बट यस दे डू हैव स्क्वाड प्रॉब्लम्स राइट नाउ। आई थिंक स्टिल अगर आप देखो, इफ द रीशफल इन द बैटिंग आल्सो, जब यू टेक आउट व्हाट्स हिज नेम, इमाम उल हक हैड मिस्ड आउट ड्यू टू एन हैमस्ट्रिंग इंजरी थी उसको, तो ही मिस्ड आउट। बट यू स्टिल सी इट वाज अ गुड बैटिंग डेप्थ थी। मोहम्मद हारिस का इंक्लूजन भी अच्छा था, बिकॉज एसीसी के इमर्जिंग कप में ये खेले, समान आई थिंक समान भी खेले थे, तो काफी सॉरी वसीम जूनियर भी खेले थे। सो दे हैव इनफ पोटेंशियल, बट यस अगेन आई थिंक देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन सर्टेन एरियाज। शाहीन शाह अफरीदी व्हेन ही गेट्स पिक्ड आउट, पाकिस्तान रियली लुक वेरी वरीड सम, परेशान आए थे कि अगर शाहीन पिटना शुरू हो गया तो आप देख लो पाकिस्तान के मुंह पे दिख के आ जाएगा कि दे आर स्ट्रेस्ड। And that was the biggest problem in the early overs when Shaheen was not getting the ball to move. Shaheen was not able to get this early wickets for Pakistan, and that's where Pakistan started crumbling under pressure. And spinners, Shadab wasn't the most clinical. Shadab has had a very poor tournament throughout, and Shadab again didn't got. I mean, 9 over 55. You could say it's a decent spell, but it's not like something that you would expect from a your leg spinner. Look at Kuldeep Yadav, how he's performing. Look at the other leg spinners in the game, and you would expect Shadab Khan to think. एक शॉकिंग चीज मेरे लिए थी कि नवाज was bowling consistently well. It wasn't like he got smashed in any particular over, but they could have continued with Nawaz as well. But again, credit to Iftikhar Ahmed, part-time bowler है चाचू, but चाचू जिस तरीके से डाल रहे, I think he was phenomenal. 3 wickets.
he did take wickets at important times of the game. शनाका को जो उसने विकेट लिया नवाज के कैच पे, जबरदस्त कैच था, भागते भागते almost he slipped and Nawaz held on to that catch, brilliant catch by मोहम्मद नवाज अंडर प्रेशर. उसके बाद आपका समारा विक्रमा का जो स्टंपिंग थी, आई थिंक जबरदस्त स्टंपिंग फ्रॉम रिजवान, एंड देन अगेन द बिग फिश कुशाल मेंडिस को जो इफ्तिखार अहमद लिया. तो इफ्तिखार अहमद picked up 3 crucial wickets, but again Nawaz wasn't that bad. And again, the spinners are not able to take wickets like you're saying, Ibrahim Bhai, and I really completely agree with that. That अगर फास्ट बॉलर नहीं चला इन लोगों का, जैसे नसीम नहीं चला उस दिन इंडिया के अगेंस्ट भी, आप देख लो नसीम तो चला, लाइक अगर शाहीन नहीं चला या हारिस नहीं चला, देन दे डोंट हैव अ प्लान बी, दे डोंट हैव स्पिनर्स दैट यू कैन डिपेंड के भाई ये रन तो भी रोक लेंगे. बिकॉज आप देख लो कंसिस्टेंटली, अगेन आई वुड कॉल आउट बाबर आजम की जो फील्ड प्लेसिंग है, काफी मुझको ऑफ दिख रही थी. इवन ड्यूरिंग इंडिया वाज सो इजीली पिकिंग अप द गैप्स. आप गैप्स देख लो कि जिस तरीके से इंडिया जस्ट लॉफ्टिंग इट ओवर द 30 यार्ड सर्कल, बाउंड्री मिल जा रही थी. देयर वाज नो क्लिनिकल फील्डिंग भी थोड़ी बहुत ऑफ थी उस दिन. बट अगेन आज भी आप देख लो जिस इजीनेस से असलंका, Samara Vikrama, Kusal Mendes, they were able to pick out the gaps and just, make the ones into twos. Again, fielding में आप देख लो throw का intent ही नहीं था, throw was very poor, very slow. So I think for that, Pakistan really need to work on their fielding, number one, and number two, the spinners need to be more economical rather than probably at least, if not wicket taking, at least they need to be economical, and that's what's important for me. You need to be able to pull it in the right lines, not give away a lot of time for the batsman, because the batsman is able to walk around the pitch. They're able to take their time just to see the gaps, take the ones, make it into two. So there's no pressure from the field and there's no pressure from the bowler. So that's a very big problem area that I'm finding in Pakistan. And Pakistan again, आज आप देख लो इतनी कमांडिंग पोजीशन में थी, 252 phenomenal. Let's just take 1 second to appreciate रिजवान की जो बैटिंग थी, जो शॉट मारा, जो सिक्स मारा, तो ओ हो मिड विकेट के ऊपर से जो he connected a 94-meter six. It looked all amazing. By 252 on a 42 over pitch, I think it was thick. Yes, maybe you could say कि ball थोड़ा grip करने मुश्किल हो रही थी. But again, that's where you want Nawaz, you want Shadab to come and sort of be economical, take wickets, which that's not happening for Pakistan. And वहीं शाहीन जब पिटना शुरू हुआ भाई, शुरुआत में शाहीन को क्या, जब उन्हें कुशाल परेरा आया, कुशाल परेरा smashed him for a couple of balls. Yes, brilliant run out by Shadab Khan. बट देन उसके बाद जो निशांका था, ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ, बिकॉज उसके वजह से रन आउट हुआ था, उन्हें अपने ऊपर ले लिया पटम निशांका के भाई मैं जो कुशाल पेरेरा के ऊपर से बीती है, मैं उसका बदला लूंगा, एंड बिकॉज ऑफ मी, एंड जबरदस्त कट शॉट्स मारा, काफी टू फोर्थ बैक टू शाहीन. शाहीन कुड नॉट डू एनीथिंग. अब शाहीन अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो आप हैबत नहीं खा सकते. यू कांट गेट स्ट्रेस्ड आउट, यू नीड टू फाइंड अ प्लान बी. एंड एक टाइम पे तो बेचारा बाबर खुद सर पकड़ लिया कि भाई मैं क्या करूं, जो कुछ भी करने जा रहा हूं, बाउंड्री हो जा रही, कुछ भी करने का. सो या पाकिस्तान रियली नीड टू सॉर्ट ऑफ divide their reliance on their bowler. They need to give accountability to each bowler, and that's where I feel that was the bigger fraud. Wasim Junior भी again I can say कि भाई हाँ काफी टाइम के बाद खेल रहा है, बट इमर्जिंग कप आप यहाँ खेले, आप जिस तरीके से आप सिर्फ बॉल तेज डालने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ गेम प्लान के साथ नहीं आ रहे कि भाई मैं ऐसा इसको ऐसा निकालूंगा, इसको ऐसा निकालूंगा. आप सिर्फ आके तेज पटकने जा रहे थे एंड आपको इजीली पिक कर ले रहे थे बैट्समैन. फॉर दैट आई थिंक again you can't keep saying कि भाई कभी ना कभी नसीम इंजर होगा, कभी ना कभी शाहीन इंजर होगा, कभी ना कभी हारिस रऊफ इंजर होगा. जो अब आप पाकिस्तान इज फेसिंग दैट रियलिटी चेक दैट दे डोंट. यस, ये लोग आपके पेस अटैक है, बट मोर एंड लेस आजकल ये लोग काफी इंजर कंसिस्टेंटली हो रहे हैं. पाकिस्तान नीड टू डेवलप अ गेम प्लान on those days जब शाहीन ना हो या नसीम ना हो या हारिस ना हो, because they need to develop Zaman, they need to develop मोहम्मद वसीम जूनियर and stuff like that. And आप देख लो, आई थिंक इन द लास्ट ईयर और सो काफी इंजरीज हो चुके हैं ये तीन टॉप फास्ट बॉलर्स को, एंड लाइफ विदाउट देम हैज टू बी सॉर्ट ऑफ लुक्ड अपॉन. एंड अगेन स्पिनर्स हैवंट बीन क्लिनिकल. आप देखो शादाब तो बहुत ऑर्डिनरी स्पिनर दिख रहा भाई ये टूर्नामेंट में. यस, बैटिंग कर लेता है व्हाटएवर, बट ही लुक्स लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी स्पिनर. इसको तो मैं ऐसा लगता अपने कोई गली के बच्चे भी मार देंगे, बिकॉज ही नॉट एबल टू ग्रिप द बॉल, इज नॉट. चलो ठीक है, बारिश हुई, आउटफील्ड बैट था, बट आई वुड स्टिल से के they need to be more clinical with the spin. Nawaz was bowling pretty okay, wicket to wicket ठीक है, डाल दे रहा था. But Zaman Khan, यार, good final over. Unfortunate not to get Pakistan home. वही एज होके जो 4 गया, एंड देन शादाब खान जो 2 रन एक्स्ट्रा दिया. इट ऑल कम्स बैक टू दोस छोटे 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 जो इंचेस अवे फ्रॉम विक्ट्री रहते हैं, एंड देन यू जस्ट डोंट नो. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देख लो, अगर पाकिस्तान मिडिल ओवर्स में, जैसा बाबर आजम खुद बोले कि मिडिल ओवर्स में अगर हम क्लिनिकल होते, मिडिल ओवर्स में हम लोग प्रॉपर विकेट टू विकेट डालते, तो मे बी वी वुड बी एबल टू
win this match. And that's where again comes to the point of his own field placement, which I don't get. Gaps आप easy छोड़ दे रहे आप, लॉन्ग मिड ऑन और मिड ऑफ को आगे ला लिए, फिर आप फाइन लेग को भी खींच दिए, तो इट वाजंट मेकिंग एनी सेंस. इजीली आप खाली कट पे आपको फोर चले आ रहा है, आपको अगेन एज जाके, एजेस तो छोड़ चुके, एजेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट कट्स पे 30 यार्ड सर्कल में से खाली लॉफ्ट कर दिए, शाइन को भी एक लॉफ्ट कर दिया, बेहतरीन श्रीलंका फोर मिल गया. सो he needs to work out. I think again the fielding has been poor. Ones are easily converted into twos. There was a point, I think it was Nawaz या कौन की weak throw करा, पूरी टीम उसको गुस्से में घूरी. So ये चीजें तो already communicated होना चाहिए. पाकिस्तान की fielding was a little bit off today. Yes, दो तीन कैच अच्छे थे, हारिस का कैच अच्छा था, नवाज का कैच अच्छा था, but in general जब आप pressure डालना चाह रहे हो opposition पे ऐसा chasing game में, then you need to control the ones and the twos and not let those easily go away. But overall, bhai, fantastic game of cricket. I think I really enjoyed um, each and every moment of this game. जो आप हारिस, सॉरी, रिजवान की भी बैटिंग देखो, आई थिंक स्पेक्टेकुलर शॉट, जो कॉन्फिडेंस के साथ वो बैटिंग कर रहा था. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन रिजवान इन दैट जोन. देयर वाज, हाँ, प्रैक्टिस सेशन में भी आई थिंक मुस्तफा में बोल रहे थे कि देयर वाज अ बिट ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस दैट वाज टेकन आउट फॉर रिजवान, एंड यू कुड सी द रिजल्ट ऑफ दैट. मे बी इट वाज कि भाई तुम ज्यादा अटैकिंग हो जाओ मिडिल ओवर्स में, हमारा रन रेट वहां पे गिर रहा है. जो आप देख रहे थे कि भाई रिजवान बाबर एक के बाद एक जब चले जाते तो फिर काफी प्रेशर पड़ जाता है शादाब, इफ्तिखार पे एंड स्टफ लाइक दैट. बट इफ्तिखार, अगेन क्रेडिट टू हिम, काफी क्रिटिसिज्म दे दे लोग उनको कि उनकी एज या एज वेज का मजाक करते हैं, बट आई थिंक इफ्तिखार ने फिनोमिनल गेम खेली. ही प्लेड एग्जैक्टली, एंड विद द बैट एंड विद द बॉल आई थिंक इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर नाउ. बोलने को तो पार्ट टाइम है भाई, आज तो मेन बॉलर था इफ्तिखार आपका. आई थिंक उनको भी काफी क्रेडिट जाता है. बट यार जो बैटिंग, कुशाल मेंडिस, शादीरा विक्रम, समारा विक्रम, अनदर ब्रिलियंट बैट्समैन फॉर श्रीलंका. जिस तरीके से स्वीप शॉट्स खेलते थे, द बेस्ट थिंग अबाउट श्रीलंका वाज कि भाई उन्होंने कोई भी टाइम पे जब भी विकेट गई, उन्होंने अपना इंटेंट नहीं छोड़ा ऑफ विनिंग द मैच. दे डिड नॉट फील कि हाँ भाई मैच हो गया, हम खत्म हो गए. जैसा आप देख लो, लाइक अफगानिस्तान, जब I'm talking about before the Super Fours, they left the thought of winning also. So that's what I appreciate about Sri Lanka. कि भाई Pereira गया, Nissanka took it upon him. He continued to hit the fours. Mendes आके जबरदस्त, 8 चौके एक छक्का जो मारा. Again 91 पे आउट हो गया. Unfortunate nervous 90s थे. But again a fantastic catch to get out to. You really can't do much. काफी back foot पे आगे थे. He got cramped up for room और थोड़ा बॉल मारने गए and it just lofted in the air. But a very good catch from Harris. But the partnership between Sadira and Kusal Mendes, yeah, too much. Samara Vikrama ki sweep shots, all kind of thing. And then Charita Salanka, all he did was try to find. It was simple, but all I was doing was trying to find the gaps, trying to get runs, and just continue taking the scoreboard. And exactly the same thing. And that's where again, वही है कि यार Pakistan should have added more pressure, had added more, इफेक्ट कि भाई नहीं, रन जाना ही नहीं है, जान डाल देना, ये डाल देना. rather than, I think मेरे को ये मैच में, rather than Pakistan getting back into the game, I think Sri Lanka led Pakistan back into the game by losing wickets at the wrong time. कुशाल मेंडिस का विकेट ले लो आप, या उसके बाद धसन शर्मा का ले लो, धनंजय सिद्धू देखो, ये लोग खुद काउंटर मोमेंटम शिफ्ट हो गई थी थोड़ी पाकिस्तान की तरफ, एंड श्रीलंका वर लेटिंग द गेम गो अवे फ्रॉम देयर हैंड्स. बट यस, चरित्र match winner है. He has won a few matches for Sri Lanka in the past as well, and आप देख सकते हैं from his temperament, the way he was saying कि भाई मैं खाली गैप ढूंढ रहा था, जब मौका मिला चौके का मैं चौवा भी मारा, शाहीन को भी चौवा मारा था, वो एक अच्छा straight down the ground, he just lofted it over and he got a 4 for that. So I think those are the moments where you have to applaud Charita Sri Lanka's thought process. But again, more than Pakistan coming back, yes, Shaheen का जो over था brilliant, but again sort of Dasun gave his wicket away, and then Dhananjaya gave his wicket away. Velela के ball तो जबरदस्त डाला Shine. I think it was one of the best over I've seen from him. 4 runs and 2 wickets जो था, I think was the 41st over or something like that. And then Zaman, I feel for Zaman Khan a lot because he bowled an incredible, 4-5 delivery, जो 4 delivery था, जो 4 गया, unfortunate था. Ibrahim Bhai says in other news, Imran Malik has replaced Shivam Mavi in Asian Games squad. Mavi has a back injury. Unfortunate यार शिवम मावी का बेचारा. नहीं think उन्हें last श्रीलंका इंडिया में ही खेला था, जो भी खेला था, but yeah, I mean, good news for Imran Malik, but he really needs to get his line and length back. Hopefully he, I know आप 150 क्लिक्स डाल सकते, लेकिन आजकल के 150 क्लिक्स में देख लो, सिराज भाई भी 148 डाल रहे, शाहीन भाई 140 है वो डालते हैं, बट स्टिल अगर आपके पास लाइन एंड लेंथ बराबर नहीं बैठी तो आप बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड भी रहो तो आपको फोड़ भी सकते. आई थिंक उमरान really needs to take things seriously. Yash Thakur as a reserve,
who was the reserve bowler for Asian Gill, also injured, which opened the door for Umran. Okay, that's God's way of helping Umran probably, but Umran really needs to take this opportunity by both hands and make sure that he becomes an asset to Indian cricket and doesn't become a I mean he's one of the few who can bowl 115 right now in today's cricket, but he needs to be able to be economical as well, and that's what's more important. But India Bangladesh है कल, India Bangladesh again. I'm expecting a few changes probably. सूर्या कुमार यादव का चांस मिल सकता है, अगर श्रेयस अय्यर फिट है तो श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं. आई थिंक यू माइट बी सीइंग अ फ्यू चेंजेस हियर एंड देयर, बिकॉज अगेन वेट राउंड रॉबिन कंप्लीट करने के लिए है, ये सुपर फोर्स कंप्लीट करने के लिए. देयर इज नो प्रेशर इन दिस गेम फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया आर ऑलरेडी क्वालिफाइड इन द फाइनल, who meet Sri Lanka, who won today in this crucial encounter. So I feel there might be a few changes. You might see Shardul Thakur coming back, you might see Akshar Patel also playing with Shardul Thakur, you might see a few things going here and there, and yeah, I think Shami might play in place of someone, just to give everybody an opportunity. इतना travel करे, इतना इधर आए, तो I think I'm pretty sure कि वो लगाएंगे. बट आज का मैच यार मेरे लिए तो बहुत, आई थिंक दिस इज वाई वन ऑफ द फ्यू क्रिकेट गेम्स दैट यू नो अगर इंडिया होती तो आई थिंक आई वुड हैव बीन आउट ऑफ ब्रेथ. इंडिया होती तो सांस खत्म हो जाती थी मेरी. बट पाकिस्तान को अगेन दे नीड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिफोर द वर्ल्ड कप. अ लॉट ऑफ रियलिटी चेक्स हैव बीन ओपन फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ द फील्डिंग, इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ द बैटिंग. यस, बाबर आजम को काफी लोग क्रिटिसाइज करने वाले, बट आई फील ही गॉट आउट टू अ वेरी गुड डिलीवरी. यस, he shouldn't have probably attacked Walalage based on what he saw against India, but he was looking in good touch. Fakhar Zaman is probably the weakest link right now for Pakistan's batting. In the bowling, again, I would say I won't call too much because Shaheen is a class bowler and the way he pulled things back. But Shadab, Fakhar Zaman, I think these two guys have to really check themselves immediately to get something going for this team. वसीम जूनियर देखो आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, जमान खान को ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज ये लोग अभी अभी आए हैं. बट शादाब पूरा टूर्नामेंट खेल चुका है, फखर पूरा टूर्नामेंट खेल चुका है. आई थिंक Babar Azam should probably promote himself up, or maybe Babar probably should promote himself up to the order. But again, वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के पीछे जाएंगे. एंड इमाम का क्या एक्सटेंट है इंजरी का, अभी तो हमें पता नहीं. हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी या बैक स्पैस्म था, वन ऑफ द टू, जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्ले. आप देख सकते थे, he was getting his back rubbed before the game. But फखर का तो बहुत बुरा है. मेरा का घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग. स्टैट पैटर बॉबी बायलैटरल में नंबर 1, बिग टूर्नामेंट में फ्लॉप. हाँ, बॉबर को ड्रॉप कर दो. आई मीन देखो बस, नहीं तो कैप्टन तो ड्रॉप नहीं होगा. आई थिंक देखो वो खुद ही बोला बॉस, उसको तो विराट कोहली से कंपेयर करो भी मत, बिकॉज विराट कोहली ऑब्वियसली लाइट ईयर ahead of him, and it's obviously going to be the same case. Virat Kohli is light years ahead of him, and we all know that for a fact. और वो जब खुद ही एक्सेप्ट कर लिया तो उसका तो कुछ भी नहीं है. बट या आज तो भाई जो डिसीजन मेकिंग थी इन टर्म, वो ये फील्ड प्लेसमेंट्स, एंड अगेन बेचारा उन्हें खुद परेशान हो गया. उसके एज बॉलरों को जब मारे थे तो ही रियली डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड परेशान हो गया, सर पकड़ने लगा. बट टुवर्ड्स द एंड आप देख लो, आई थिंक तीन तीन कैप्टन थे वहां पे. एक बाबर आजम हो गया था, एक शादाब खान हो गया था वाइस कैप्टन, और फिर शाहीन खुद अपना जो पीएसएल के कैप्टनसी एक्सपीरियंस है वो खुद शेयर करा था. एट सम टाइम 5 people talking in that conversation. It was interesting to see the way they were pulling things together. But Sri Lanka holding their nerve, Charita Sanka, भाई ये लोग अलग ही ग्रेवी. एंड अच्छा मजा आया था लास्ट टाइम टू प्ले श्रीलंका. It was a close encounter. They're always a very sticky opposition, always an opposition that likes to give a fight. And like today you can see कि भाई जिस तरीके से उन्हें लड़ते यारो, they give their heart out and leave nothing out, nothing to regret. जो है पूरा खेल के जाओ. लास्ट टाइम भी इंडिया थोड़ी बहुत परेशान हो गई थी बीच में, जब कौन थे उस्ताद उन्ना वेलालागे एंड इट वाज वेलालागे एंड धनंजय द सिल्वा. लास्ट टाइम जो द सिल्वा आउट हो गया था, शुभमन गिल ने जबरदस्त कैच पकड़ा था वेलालागे का, फुल ट्राई था एंड तक, बट दैट फेल शॉर्ट. बट आई थिंक it's gonna be fun to see this final tomorrow. कल का तो मैच जो भी इंडिया बांग्लादेश, अगर बारिश भी हो जाती है, आई थिंक नो वन गोइंग टू वरी. अगर कल बारिश भी हो गई तो सब छुट्टी ले लेंगे. बट आई थिंक फाइनल के दिन कुछ नहीं होना चाहिए. फाइनल शुड बी अ गुड डे टू वॉच गुड क्रिकेट. पहली कोहली की बात ही नहीं है, वो तो रोहित के बराबर भी नहीं है. His captaincy shared his form in big tournaments. He's riding on luck in the past tournament twice. Knocked him out. Yeah, I think there was the batsman. See, he's good, but again, yes, big tournaments he hasn't really shined, and he still does have a bit of time on his side. I think his captaincy, yes, there are some calls that he really needs to work upon. Particularly, I think bowling rotation. I think that's one thing that he's weak at, and field placements. Again, he doesn't understand kidhar, or I think toss.
choose करके what to toss पे जो select करते हैं आप. I think that is also one area that I'd probably call our Babar a bit of one. Batting wise, yes, he is a good batsman. Maybe not in the big tournaments yet. You never know. I mean, a tournament can change a lot of things. And I yes, like 150 here against Nepal, that's not that credible. But again, it is something. But again, he has a captaincy that he has to think, and he got them into another semi-final. तो नहीं बोल सकते, but if he would have got them into the final, then people would have been talking about his captaincy, not shit and stuff like that. But I still agree with you on certain points. Probably going to be weaknesses, and he had to probably think. And again, Velela को attack करने का तो कोई point नहीं था. He should have just held his ground. When you saw what happened against India, I think he should have probably made a better decision. But I think better opposition right now in terms of. I think it's a blessing for Pakistan as well because Pakistan are without Naseem Shah, without Haris Rauf, without their ace bowlers. I think in that aspect, Pakistan a little bit probably should be a little bit happier that they're not going to play in the final. With all due respect to them, that नसीम नहीं है, हारिस नहीं है, जमान एंड इनके साथ अगर आप आके खेलने गए तो आई थिंक इंडिया आपको एनी डे फोड़ देंगी. आई थिंक श्रीलंका वुड बी अ मोर क्या बोलते हैं heftier opposition for India, and we saw that almost Dhananjay and Velela pulling things back. We were scratching our heads, so I think वो हिसाब से it should be there. There were favorites as per commentator, and Sri Lanka was not toss करके बैटिंग करता जब bowling करनी होती है, जब बैटिंग करनी होती था. फिर भी I think they pulled it back with all. I mean, for me, it was more Sri Lanka giving it back than them taking it back. But again, momentum shift पे capitalize करना is also a very big art, and that's where you know the Shaheen over that he. But I think you have to give credit to that 2 wickets and whatever he managed almost on a hat trick. He changed the complexion of the game. As a fan, as a cricket watcher, भी आप थोड़ा बहुत excited हो गए थे कि damn शिट क्या हो गया ये मैच में. मेरे को तो बहुत मजा आया यार देखने में. लाइक आई वाज लाइक शिट ऑलमोस्ट आगे क्या वापस ये वो देखना पड़ेगा. आई थिंक मैं पूरी घर लाइक ऑल ऑफ माय मॉम डैड एवरीबॉडी इज अप टिल 2 o'clock and they were like watching the game because काफी कम मैचेस होने लगे ऐसे वरना वन साइडेड हो गया तो मजा नहीं आता. सो आई थिंक in that aspect I still give both the teams credit. Pakistan also batting in middle overs is a problem. Out of 42 overs, they played 20 overs. The 14 overs, I think that was where Iftikhar and Rizwan sort of understood how to bat on this pitch. Very frankly, like when I accelerate karna shuru kar diye, they started taking risks. Rizwan, the way he came down the ground, I think certain shots that he played with such foot movement, and then the deep mid wicket six. I just can't get away that bat ki jo awaaz, like middle of the bat. I think it was a fantastic shot. But prior to that, आप देख लो जब Abdullah Shafiq थे, he consumed a lot of deliveries. Babar also consumed a lot of deliveries, and that's what I think they have a lot of areas that they need to learn on and get upon. And it just looks like अभी बहुत time हो गया है. Pakistan should have probably been already there in terms of batting. But I think yeah, again for me it's that the way Rizwan and Iftikhar came out and played after the second rain interruption. That is where they understood कि अच्छा भाई ये बैटिंग पे ये विकेट पे अटैक कर सकते हैं अपन, ये विकेट पे रिस्क लेने में ही रिवॉर्ड है. And then आप देख लो the last 14 overs how many runs they got. That was the differential factor over there. I believe their star bowlers are not in good shape. They are overbowled and badly managed. Shaheen be injured हो जाएगा. They need to rotate their squad in bilateral rather than a virtual. Exactly. I think आई मीन वर्चुअल सेमीज में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था. बस ऑलरेडी नसीम का राइट शोल्डर चले गया था एंड हारिस कॉबली का चले गया. सो दे हैड टू रोटेट इट नाउ. बट आई गेट द पॉइंट कि भाई बायलैटरल में प्रॉब्ली यू एंड अगेन दैट्स वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम कि आप जमान एंड वसीम जूनियर को आप खिला रहे जब पे पूरे क्या बोलते हैं पूरे year when you had bilaterals, you could have probably rotated them evenly, and probably you don't need to focus on bilaterals so much. You could probably rotate Zaman Khan, you could probably rotate Apna Dhani, or you could probably rotate. I'm forgetting one more guy. Was it Ehsanullah? I think Ehsanullah or someone. That guy also was 150 clicks, and Shaheen, and you can rotate these guys in bilaterals, and then in towards the main big tournament, you get a proper squad. So everybody gets a piece of action. Everybody gets a piece of playing cricket. Everybody gets used to it. Emerging Cup में से yes, I get up a point of getting Haris, and because Haris quite played very well and he was captain, and also with the fact that Wasim Junior भी खेला था and Wasim Junior batting भी कर लेता. But again, I think you're right in saying that bilaterals method they should be able to sort of chop and change, and then accordingly everybody gets workload management. इतना cricket भी नहीं खेलते आप compared to Indian crickets like IPL and then her league and this and that. But yeah, I think actually Pakistani players भी अच्छा ही खासा खेल लेते हैं. BPL ये वो भी खेलते हैं ना तो. Love Sri Lanka, what a champion team, full on thriller, and that's what I'm scared for the finals, man. Like honestly, बोलने को बोल सकते कि हाँ भाई इंडिया जीत जाएगी, but you never know. These guys are also like they're, I think they're one less. I think Shanaka is one less of
Asia Cup from India. So I think it's going to be Rohit Sharma. So I think it's going to be fun to see Sri Lanka India final, and I am pumped for this match. Kal ka match, so I think again a few changes here and there. 100% रहने वाले. You'll probably get to see Sky. You'll probably get to see Tilak Verma. Also, you never know. You might get to see a few changes where like you might even get to see Ishan Kishan open. I don't know because कल का मैच दे शुड गिव opportunities is what I feel because everybody who's already played overplayed नहीं करना चाहिए. Probably give a rest to the king. Probably give rest to the Jasprit Bumrah needs to get rest for sure. Because जब उन्हें slip हुआ था मेरी तो फट गई थी हाथ में. तो सिराज है इल्ना है जो probably finals खेलने वाले let them take a day off and just chill. Yeah, obviously practice तो होंगी in the nets and stuff like that. But I think जब लोग अब शुरुआत के टूर्नामेंट से आके बैठे हुए हैं यार उन लोग को एक तो चांस दे दो. अक्सर है या सूर्य कुमार यादव है या तिलक वर्मा है जो भी. आई मीन नॉट इवन इफ तिलक वर्मा बिकॉज संजू को बुरा लगेगा बट व्हाटएवर जो भी खेल सकता है. वेदरमैन मुस्ती डांसिंग इन लंका विद या मुस्ती आप हर तरीके के फैन के लिए डांस कराऊंगा. लंका पाकिस्तान हर किसी के मैं कहीं भी घुस गया हूँ उन्हें. बट overall, yeah, it was a fantastic game of cricket, a fantastic day of cricket. I mean, बारिश again आई गई hide and seek खेलते गए. But again, another round of applause या कुछ भी बोला appreciation यार. वो groundsman की जो job है यार next level है. हमारे पास देख लो groundsman अगर pitch सही नहीं बनाया तो उसको तो हकाल ही देते job से. And these guys प्ले दिन रात मेहनत कर रहे हैं यार. हर दिन उन आ रहे सिंक्रोनाइज्ड वे में. उन लोगों को एक अलग ही आई थिंक दे फॉर्मेशन है उन लोगों की जहाँ पे इधर से दो आते इधर से एक आता फिर इधर से स्पेक्टेकुलर जॉब. एंड जो बैक टू बैक बारिश आई एक आंच नहीं आई ग्राउंड पे एक आंच नहीं आई पिच पे. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. इट्स हैवी कवर्स it's heavy lifting and I think yeah spectacular job. And Pakistan are out. That is the biggest news of the day. Ke Pakistan are knocked out of the Asia Cup. Sri Lanka are into the finals to face India, which as I speak में बहुत हैबत हो रही because last time around also it was a good game of cricket. Yes, India did get a little bit of shock when Dhananjay and Velalage, young Velalage 42 runs. बट अब देखते हैं क्या होता है फाइनल में. कल इंडिया बांग्लादेश से एक्सपेक्ट अगेन I'm going to say expect a result, but Bangladesh will also want to go out on a winning note. They've not been the most clinical in batting. They have decent bowlers in Shariful Islam and Taskin and stuff, but it might not be an easy battle to win. But hopefully everybody gets a chance. Kishan Gill, Tilak, Rahul, Sky. Wait a minute. Kishan Gill, Tilak, Rahul, Sky, Akshay Shardul Pandya, Shami and Prasid. Yeah, I think yeah, you could probably. I don't know if Kuldeep will play or not, but you could. I don't know. I mean, देखना तो पड़ेगा कि कैसे जाने वाला है. And Pandya to captain बोल रहे हैं आप. Interesting. Could be. I think yeah, वही है कि सब कुछ. I think Shreyas might also play because Shreyas का pack थोड़ा बहुत better है I think. So Shreyas also could probably cut back into that order. लेकिन अभी कल देखेंगे बांग्लादेश and India again. Nothing to win, nothing to lose for India. Similarly with Bangladesh, nothing to win or nothing to lose because Bangladesh have been knocked out and India are into the finals. So it's more or less just to complete the table. But again, India will be giving everything. Bangladesh will be giving everything because these two teams probably will meet next month as well in the World Cup. So it's gonna हाँ पुणे मैच है इन लोगों का. तो मजा तो आने वाला है देखने में. पाकिस्तान को रियलिटी चेक बहुत सॉलिड मिला ये टूर्नामेंट से. आई थिंक देव अंडरस्टूड नंबर 1 आईसीसी टीम है आप. बट आईसीसी टीम जो मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर बोले थे कि ये रैंकिंग ना इट्स जस्ट अ वियर्ड वेस्ट ऑफ टाइम. वीक टू वीक बदलते रहता है एंड इट डजंट मेक सेंस कि आप किससे क्या पॉइंट्स हो रहे हैं. जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. यू नीड टू नॉट लुक इनटू इट. एंड बायलैटरल्स में अगेन आई थिंक पाकिस्तान नीड टू स्टार्ट रोटेटिंग देयर टीम स्क्वाड. एंड bilaterals, Babar probably will gain a lot of experience from this as a captain as to in which situations, what field placement you have to make, in which situation, how do you bat. And for Rizwan and Iftikhar, again, the way they played that 14 overs after the break, rain interruption, they also understood that you need to sometimes attack in the middle overs to get the run rate going up. But overall, a fantastic day of cricket. I think we learned a lot as well as fans. Nerves hold karo. End the game tak leke jao and just believe in your abilities. That's what Sri Lanka did. That's what Sri Lanka did. And now it's going to be an India Sri Lanka final. I'll catch you guys tomorrow, hopefully, for India Bangladesh. And hopefully, we have our weatherman wherever he is right now, chilling probably. But we'll definitely see you guys tomorrow. Thank you so much, everybody, for joining me. I know it's very late. But ये मैच के बारे में बात करे बिना मैं तो नहीं सो सकता था because I think it was one of the better encounters I've seen of cricket in the recent times at least. Thank you, Ibrahim bhai. Thank you, Ashish. Thank you, everybody who else is going to join. And everybody have a good night. Thank you so much. Bye bye.